Congress people are also convicted for their involvement in the riots. That's not good news for them. They can go on keeping the bogey of 2002 Godhra riots, but let them not forget it is a minister, Congress minister from Gujarat who has been convicted for terror. Now it's Congress which has to explain itself about its involvement with terror, involvement in riot which is emanating out of communal riots, and it is they who are both convicted, as a minister who is convicted, and their workers are getting convicted in 2002 riot related cases, who should be explaining rather than the BJP. So today we find that Congress party in its desperation is adopting all kinds of means to destabilize a government, popularly elected government in Gujarat. You saw that they are using CBI. Now they are tempting officers with gifts. The email transaction which are now available in public domain very clearly show you that how officers have been in direct connection with the Congress state level leaders and getting gifts from them. All this very clearly establishes the fact that the Congress party today in its desperation has gone to the extent of even, interfering with the federal structure, weakening states and their powers in order to find some acceptability in the minds of the people of Gujarat, which they will always fail. I'm tempted to ask one last question. Will the Home Minister look at what is happening in Maharashtra, where they are in alliance with NCP, especially in the light of the police shooting which has happened recently? Point blank range, people have been killed. Where is the concern for human rights? Whereas, I would like to remind you, in the case of Mr. Sanjeev Bhatt, because of an indictment given by the NHRC and subsequently also in the court, Gujarat government had to pay 1 lakh of rupees of fine for the misdeeds of Mr. Sanjeev Bhatt. And today, Sanjeev Bhatt is being supported openly by the Home Minister. And let us not forget that it is in a case where Mr. Sanjeev Bhatt was involved, his co-accused, Mr. R.R. Jain, a judge who retired with a bit of ignominy, for whom the Home Minister was himself an advocate in that case. And therefore, it doesn't augur well for a democracy when the Home Minister comes out in support of people who are being tried and inquired into for indiscipline. Thank you. Any questions? परसों, was it परसों yesterday? कल गृह मंत्री जी श्री पी चिदम्बरम की स्टेटमेंट गुजरात में जो 3 ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर और उसके बारे में जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने किया है, उसका हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंडेमनेशन करते हैं, कंडेम करते हैं ऐसे स्टेटमेंट को। इसमें हम एक पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न 2012 में जो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव है, गुजरात में आने वाले चुनाव है, इसको मन में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। गुजरात में वो बहुत कोशिश कर रहे हैं सीबीआई को दुरुपयोग करते हुए कैसे भी अंदर पहुंचना है, और गुजरात में जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, इलेक्शन के द्वारा जो गवर्नमेंट है, मनपसंद गुजरात जनता की मनपसंद सरकार है, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए जो भी कोशिश हो रही है सीबीआई के द्वारा वो जारी है अभी भी। फिर भी सेंट्रल सर्विसेज के जो भी ऑफिसर्स विद डिप्यूट होते हैं आईएएस और आईपीएस के द्वारा, उनमें जो इनडिसिप्लिन हो रही है, उनके ऊपर जब शिकायत आती है और उसमें जांच करने के समय गृह मंत्री अगर दिल्ली में बैठे हुए उनको ऐसे इशारा देते हैं कि आओ हमें आपको हमारी तरफ से हम आपको मदद देंगे, ऐसे मतलब
देने वाले, अर्थ देने वाले स्टेटमेंट देने में इनडिसिप्लिन के साथ क्या कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाह रही है? होम मिनिस्टर ऐसे इशारा दे रहे हैं कि इनडिसिप्लिन को सपोर्ट करने वाले लाए। इसको हम कड़ी निंदा करते हैं बीजेपी से, और इसमें एक पैटर्न भी देख रहे हैं कि जैसे इशरत जहां के मामले में जो लश्कर तोयबा की वेबसाइट में ही क्लेम किया है लश्कर कि वो ऑपरेटिव है लश्कर तोयबा की, और गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी उसका एक एफिडेविट में साबित किया कि हाँ वो टेररिस्ट था, फिर भी बाद में यूनियन होम मिनिस्ट्री उनके अपने बयान बदले। ऐसे ही एक ऑफिसर को गुजरात सरकार के कंसल्टेशन के बिना ट्रांसफर करके दिल्ली में ले आए, और हैदराबाद में जो पुलिस कमिश्नर थे, सोहराबुद्दीन मामले में जांच उधर करने में बहुत ही दिक्कत और रुकावट पैदा करने वाले ऑफिसर हैं, उनको दिल्ली में सीबीआई के हेड बना करके ले आए होम मिनिस्ट्री। ये सब भी डेफिनेटली गुजरात सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश जो हो रही है उसमें बाग है। हम इस स्टेटमेंट कल जो होम मिनिस्टर ने दिया उसको भी इस पैटर्न के एक बाग ही समझ रहे हैं। मैम, अन्ना हजारे, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने 22 शर्तों के साथ अन्ना हजारे को अनशन की अनुमति दी है वहाँ पे, और कहा है कि 3 दिन से ज्यादा अनशन वहाँ पे नहीं हो सकता, इस पर क्या कहेंगे? सिविल लिबर्टी और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ कभी भी कांग्रेस पार्टी एंगेज करने के लिए मन रखते नहीं हैं, और अभी भी उनको इच्छा है कि कैसे भी ये मामला चुप हो जाए, इसके ऊपर लोकपाल बिल के ऊपर चर्चा ना हो। इसके लिए जो भी कदम उठाएंगे वो डेफिनेटली उठाएंगे, परमिशन नहीं देंगे। हमें इसमें आश्चर्यजनक बात कुछ नहीं है, उनके तानाशाही के एक और इशारा है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो अनशन करेंगे वो अलोकतांत्रिक होगा। कांग्रेस एक उनके अपने बिलीफ, मतलब उनके आइडियोलॉजिकल पोजीशन कभी भी साफ नहीं बोलते हैं, मगर ऐसे इशारा देने में ही उनके आइडियोलॉजिकल पोजीशन हमें समझ में आता है। ये इमरजेंसी ले आए हुए पार्टी है इस देश में, अभी भी विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी उसी तरीके में चल रहे हैं, उसका एक नमूना यही है। Every state government takes up its own ways of dealing with and engaging with the Naxalites. I am sure Trinamool Congress, which has come to power with people's mandate, would keep the national interest in mind and engage with the Naxalites, very clearly remembering the Prime Minister's own statement that if there is a biggest threat to this national security, it is the Naxals. Also in English, sir, Anna. I said two things on Anna Hazzare. Which one? First. So essentially the fact that 3 days have been given along with some 22 odd conditionalities for this fast. The Congress party is never at ease with dealing with political parties in the opposition, nor with the civil society groups. The Congress party's arrogance and their autocratic ways are not new to this country. Unfortunately, today in our democracy, we find both political parties and civil society organizations being actively engaged in questioning the Congress party. The media is playing its role also. However, the Congress party's approach has not changed. It is a party which brought emergency into this country. Now, without declaring an emergency, the way in which they're dealing with political parties or with the media or even with the civil society is only reflective of that attitude. And this is a very clear indication of how they are dealing with. So your party will, in a sense, formally support what Anna Hazzare has passed
We have been giving moral support to anyone who is ready to fight against corruption. Thank you very much. Thanks. Ma'am, one question. Ma'am, you must have seen the story related to a slip-up by a US diplomat who said that she started looking dark like chameleons. Oh, I didn't know about it. What is this? There is a US diplomat in Chennai while, addressing a group of Tamil students. She said, I became dirty and dark like chameleons. Her name is Maureen Chow. She's the vice consul of the US consulate She in traveled, Chennai. I think she traveled, did a train travel for She did 24 a hours. train travel and then she said this. She took a train journey from Delhi to some place, and then she said that I became dark and dirty, like the devil. That's a racist remark. Well, I'm hearing it from you for the first time, but if indeed she has said that, I'm sorry. It's a very, very poor reflection of her understanding. And being a diplomat, I would rather have her speak far more diplomatically than this. Thank you. Thank you.